Everyone, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is Weather and Climate. Let's start the chapter. Chapter 4, Weather and Climate. My learning plan. Through this chapter, we will be able to know about the weather, factors influencing climate, climate and measuring climate. Before starting the chapter, there is a warm-up exercise. You have to identify and name the following. So this is ocean, mountains, forest, snow. Now, weather. What is weather? Weather is the condition prevailing for a short period of time over a small area. वेदर एक वो कंडीशन होती है जो बहुत ही कम टाइम के लिए होती है एंड बहुत ही कम एरिया में वेदर अफेक्ट होता है इट इज अफेक्टेड बाय मेनी अदर फैक्टर्स लाइक टुडे द वेदर विल बी सनी और क्लाउडी बट इट मे चेंज द नेक्स्ट डे वो नेक्स्ट डे चेंज भी हो जाता है वेदर चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन ओवरऑल चेंजेस इन वेदर कंडीशंस दैट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड इट मेक्स सीजन जो ओवरऑल चेंजेस होते हैं वेदर कंडीशंस में जो लंबे समय तक चलते हैं दे आर कॉल्ड सीजन्स. It can also be different at different times of the day. Can also be अलग अलग time of the day पर change होता रहता है तो वो different हो सकते हैं. In this way we experience different weather conditions from the morning to the evening in a day. तो हम अलग अलग weather conditions देख सकते हैं. Morning में अलग रहता है, evening में अलग रहता है, night में maybe और change हो जाते हैं. So we can see a different changes or fluctuations in the weather. Tidbits: a meteorologist is a person who studies the weather. Meteorologist is the person जो weather के बारे में study करते हैं. Meteorology is a science which deals with weather forecasting जो हमें पता लगता है कि maybe it will rain, maybe it will be a good weather. So all these things we came to know through this meteorology. Then comes climate. Climate is the average of weather conditions for a long period of time across a large area. Climate is the average that is of weather conditions का जो लंबे समय तक रहता है और एक large area पर. Different places of the world they have different types of climate. जब different places होती हैं world की they have different types of climate. Like different regions of our country they have different climate. हमारी country के different regions हैं, जगह है, कहीं पर ठंड है, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर moderate climate है. So in our country Kashmir has cold weather while the weather of Tamil Nadu remains hot throughout the year. So it depends upon region to region. Climate also changes. It rains throughout the year in Meghalaya, while Rajasthan remains dry almost throughout the whole year. Rajasthan, what it happens? Rajasthan it remains dry almost throughout the year. The climate of a place affects the food and clothing habits of people, animals, and plants of that animal. So what happens is the climate of a place. किसी भी जगह का जो climate होता है वो affect करता है food को और clothing habits को people. Animals and plants of that place. Likewise, different parts of the world they have different type of climate. The different type of world hai, they have different types of climate. Some places such as the Democratic Republic of Congo, it remains hot and wet almost throughout the year. It remains hot. Other places such as Saudi Arabia experiences a hot and dry climate. Some countries such as Canada, Russia, they have very cold climate. Now comes the factors influencing climate. Climate of a place is determined by various factors. What are the factors that affect the climate? Tidbits. People who study the climate are known as climatologists. तो क्लाइमेट की स्टडी करते हैं उन्हें क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है. अब क्लाइमेट जो होता है अगर किसी भी चीज का बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं लाइक डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर से उसका कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हाइट अबव सी लेवल, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी कितनी है एयर के अंदर. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर. सन कैसे शाइन करता है? वर्टिकली थ्रू आउट द ईयर. देयरफॉर इट इज वेरी हॉट. तो इक्वेटर के पास हमेशा गर्म रहता है, गर्मी रहती है. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर चले जाएंगे पोल्स के टुवर्ड्स, सन की रेज स्लैंटिंग हो जाती है एंड दे प्रोवाइड लेस हीट देयर. तो इसलिए पोल एरियाज पे ठंड रहती है. देयरफॉर टेम्परेचर अवे फ्रॉम द इक्वेटर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड. क्योंकि लैटिट्यूड बढ़ता चला जाता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है. On the basis of temperature, three heat zones are found on the globe.
These are given below. First है हमारा टॉरिड और हॉट जोन. This zone is between the equator and the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ये जोन जो है वो किसके बिटवीन है? इक्वेटर, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Second comes temperate or moderate zone. This zone is between the tropics and the Arctic and the Antarctic circles. Frigid or cold zone. This zone is between the Arctic and the Antarctic circles and the poles. तो फ्रिजिड तो हमारे पास ये तीन जोन है. टॉरिड जोन जिसे हम हॉट जोन कहते हैं, टेम्परेट जिसमें मॉडरेट रहता है क्लाइमेट, एंड फ्रिजिड और कोल्ड जोन जिसे आर्कटिक एंटार्क्टिक जहां बहुत ठंड होती है. हाइट अबव सी लेवल. हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल उसकी ऑल्टीट्यूड होता है कि वो सी लेवल से कितना ऊपर है. हाई है, जितना हायर ऊपर, जितना ऊपर हम जाएंगे तो टेम्परेचर उतना ही कम होता चला जाएगा. दिस इज सो बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता है जब हाइट बढ़ती चली जाती है. टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर्स ऑफ द हाइट. हम हर 165 मीटर्स तक जब पहुंचते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे हो जाता है. Thus, hill stations like Shimla, Nainital, Udagamandalam, Ooty, and Darjeeling, they are cooler as they are located at higher altitudes पर located है. Reason for this is that कि higher we go, air starts thinning. तो जितना हम higher जाएंगे, air उतनी ही पतली होती चली जाती है और ये जो thin air होती है, वो less dense होती है और वो less heat absorb कर पाती है. Distance from the sea. Places located near the sea coast वो experience करता है एक moderate climate को, जो neither hot है ना ही cold. On the contrary, places away from the sea, they have उनका है extreme climate with sultry summers and very cold winters. अब places जैसे मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, उनकी moderate climate है क्योंकि वो situated है near the sea. जबकि places दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, पटना, जयपुर, वहां पर extreme climate है क्योंकि ये places sea से दूर है. Direction of the winds. Direction of the winds also एक important role play करता है in changing the temperature of the place. ये depend करता है areas जहां से winds blow करती है. Winds blowing from cold region, अगर ठंडी जगहों से हवाएं चलेंगी तो जगह ठंडी होगी. Winds जो hot region से flow होंगी वो make the place hot. Winds coming from the desert areas वो गर्म होती है, ड्राई होती है, और जो सी साइड से कैरी होती है वो कैरी करती है आपका मॉइस्चर. क्लाइमेट में आपका चिपचिपापन आ जाता है. क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो ये रेन, और जब ह्यूमिडिटी होती है तो थोड़े टाइम बाद एक माहौल बन जाता है और बारिश होने की चांसेस रहते हैं. तो इट कॉजेज रेनफॉल इन मेनी रीजन. ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. वो कॉज होती है ड्यू टू इवेपोरेशन, जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है इसके सरफेस से. क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आल्सो अफेक्ट होता है बाय ह्यूमिडिटी, क्योंकि वो रेन कॉज करता है एज वेल एज स्नोफॉल भी कॉज करता है इन सम हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस. डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी ह्यूमिडिटी ऑफ प्लेसेस को अफेक्ट करता है. प्लेसेस नियर द सी एक्सपीरियंस करती है हाई ह्यूमिडिटी क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस करता है फ्रॉम द सी नियर बाय एज द विंड्स ब्लोइंग ओवर द सी कलेक्ट अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम. अब जो सी के साइड में जो प्लेसेस होती हैं वो वहां पर ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन, सी के पास एरिया है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, वो होता है सी में से. तो विंड्स जो ब्लो करती है ओवर द सी वो लॉट ऑफ मॉइस्चर अपने साथ कलेक्ट करती है, और कोस्टल एरिया जैसे कोलकाता, भुवनेश्वर, मुंबई, चेन्नई, ये बहुत ह्यूमिड हो जाते हैं प्लेन एरिया से, दिल्ली एंड जयपुर से कंपेयर कर. Tidbits since all the seas of the world are linked to each other, लेकिन उनका लेवल सेम है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, लेकिन हाइट और ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस मेजर्ड इसीलिए सी लेवल के अकॉर्डिंग किया जाता है. मेजरिंग क्लाइमेट. अब क्लाइमेट को हम मेजर कैसे करते हैं? नंबर 1, बैरोमीटर. बैरोमीटर हम यूज करते हैं टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसा है उस एरिया का. ये मेजर करता है प्रेशर जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है बाय यूजिंग मर्करी, एयर और वाटर. थर्मामीटर. थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर डिग्रीज में. इसके दो स्केल्स होते हैं, सेल्सियस एंड सेंटीग्रेड कह दो एंड फ़ारेनहाइट. आज भी इवन मेजर हमारी बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मामीटर. रेन गॉज. रेनफॉल ऑफ एन एरिया मेजर्ड होती है रेन गॉज की कितनी बारिश होती है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, महीने में, साल में. तो ये कैसे मेजर होता है? दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज रेन गॉज. इसको कहते हैं यूडोमीटर या फ्लूवियोमीटर. इसे हम यूज करते हैं गैदर करने के लिए, मेजर करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ रेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है
तो ये meteorologist यूज करते हैं. Let's come to the new words. Weather, the state of the atmosphere, moisture, slight wetness, climate, the weather condition prevailing in an area over a long period, prevailing, existing at a particular time, breeze, gentle wind, hemisphere, half of the globe. Quick bites. Weather is the condition prevailing एक short period के लिए जो condition होती है weather होता है. Climate is the average of weather conditions for a long period of time. Places near the equator they have warmer climate than those away from the equator. Places situated near the sea level that remains warmer than those situated at higher altitude. Earth is divided into three climatic zones, the torrid zone, the temperate zone, and the frigid or polar zone. Places near the sea, they have moderate or mild climate. Amount of moisture or water vapor present in the air that is called humidity. Now it's work to do, take the correct option. Now the condition of a place at a given place and time is called weather. A person who studies weather is called meteorologist. Height of a place above sea level is altitude. Barometer is used to measure atmospheric pressure. Changes in weather conditions, they are the cause of seasons. Let's do the fill in the blanks. The heat zone nearest to the equator is the dash zone, that is torrid zone. Places near the sea coast, they have dash climate, they have moderate climate. The air comes from the sea is called dash breeze, sea breeze. The places near the equator receive more sunlight. Places located at higher altitudes, they have cold climate. Now let's do the true and false. The earth is divided into two parts by the equator. True. Climate of a place affects the life of the people. True. The weather of the place keeps on changing from time to time. True. As we go higher, it becomes very hot. False. Humid climate causes rainfall. True. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Complete the exercises. Bye bye. Take care. Thank you.